Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you will be fine and in good condition. And today is our lecture number 13, and we will continue the lecture slides of lecture number 12. And we will be trying to complete our lecture. So please respond that you can clearly hearing me and the lecture slides are visible to you. Yes, sir, नजर आ रही है. Okay. So in lecture number 12, in our previous lecture, we already have discussed the AVL tree, and we have discussed the conditions for the AVL tree. And AVL tree is a balanced binary tree having balanced values 0, -1, and 1 at different nodes at different subtrees levels. And then we take an example to make the AVL tree, and if there was a problem with the level of the AVL tree, we have some formulas, we have some cases, we had studied some cases to balance, to keep the tree balanced. So those cases were mostly doing the rotation technique, and we have studied those cases. Then we studied the insertion in AVL trees, and we talked about the deletion cases in AVL trees as well. So now in today's lecture, and for the deletion in AVL trees, we discussed 5 cases, and we will not be discussing the C++ implementation of the deletion for AVL trees. However, if you people are interested, you may find the source codes in your compilers header files section, or in your STL library, standard template library, or you can find the deletion classes from the internet as well, if you people are interested to perform them. However, they are not part of your course. Sorry. Now let's talk about the other uses of the binary trees. The other uses may be, the first use is expression trees. So we can use binary trees. Mostly we talked about the usage of binary trees in searches, that it is making the search process very faster, very effective. However, this can be utilized. Binary trees can be utilized for various applications, for various processes in computer science and in other branches as well. So the first one is expression trees. So now let's see what are expression trees. What is an expression and what are expression trees? Expression trees and the more general parse trees and abstract syntax trees are significant components of compilers. So now you know that what is a compiler? Compiler is a software, is a program which processes your human readable code into and converts that code into the machine code, because machine or the computer, it will not understand our programming language, because this is high level language. We are just writing it like our own English language. So any of the programming language needs a compiler to convert your program, your understandable program, into the machine understandable program. So for this purpose,
compiler uses different components. Those components may be linker, assembler, and then it converts, with the help of these two, it converts the program and successfully compile the program into the machine code, which is understandable by the computer. So expression trees and more general parse trees and abstract syntax trees are significantly used by the compilers. Now let's consider this expression tree. So you can see you have on the left side at the top of the slide, you have this expression parenthesis a plus b into c plus parenthesis d steric e plus f steric g closing parenthesis. So you can see it is very visible to you on this slide that this expression has been expressed on this expression tree. So you can see this is a mathematical expression and it is being represented on this binary tree. And you can see on the root node, you have the plus operator, and in the left subtree, you have this plus. Then you have in the sorry, in the right of the plus operator, you have steric and b into c. And then this b into c will combine with a. So your your left hand side of the expression is being represented on the left subtree, and the right hand side of the expression is being represented on the right subtree. So you can see on the right subtree you have this multiplication sign, then you have plus, and uh, you have further nodes of the expression. So this is an expression tree. You can represent any kind of expression trees on the binary tree. This is one of the usage, and expression trees are being utilized in the compilers, in the operating systems as well. And for computer science students, there is a complete course named as compiler construction and optimization. So in that course, they develop a compiler. They built a compiler in a programming language, and then they test that compiler, and they study various characteristics and types of the compilers. Now, there is another kind of a tree, parse tree for an SQL query. SQL stands for Standard Query Language. So as you heard the name of database. So what is a database? Database is, you can see, computer-based storage of the records. So there is a program called SQL Query, Structured Query Language, which is used with different database softwares like Oracle, like SQL Server for Microsoft, and some other kinds of database programming languages. All of them are using the SQL query, standard query language. And by using that query language, you can fetch, you can receive, you can get various type of data from the database. You can access that data. Also, you can put some data on the database by using that SQL query language code or command. So that SQL query language also uses parse tree, which is also a type of a binary tree. So this is another usage of the binary tree. Consider querying a movie database. I'm giving you an example of the parse tree.
So consider querying a movie database. Let's suppose you have a movie database and you want to query that. So find the titles for movies with stars born in 1960. So the database has tables, stars in, title, title of the movie, year of the movie, star name. Then for the movie star, you have another table in the, so you have these two tables. Let's suppose you have these two tables in the database of the movies. You have a database for, let's suppose you have a database for the Hollywood movies. And in that database, you have two tables. And the name of the first table is stars in. And in this table, the information is stored like this: the title of the movie, year of the movie, and the name of the star who worked in that movie. Now, in further detail, you have another table that is named as movie star. And for the movie star, you have the name of the star, address of the star, gender of the star, and his or her birth date. Now, how you will write the query, this SQL query? The SQL query will be working with these two tables like this: select title, select title. Title means the name of the movie. Select title from stars in. Stars in is the first table, comma, movie star. This is the second table, where star name equals to name and birth date like percent 1960. So this query, which is an SQL query, it will work with the database and it will fetch, it will get out the data. It will put out the data of the movie in which an actor worked and he or she was born in 1960. So this is an SQL query which is mandatory for working with the databases softwares like Oracle, like SQL Server. I'm giving you the examples as well. So you need internally this query is being represented on a parse tree, which is a kind of a binary tree, So I hope you have understood this example. If you have a question, you can ask. Now this is the query, SQL parse tree. This kind of a tree will be made from the previous query. You can see. And this is the example of the binary tree being utilized as parse trees for SQL commands. Now there is another technique used for the compilers, and that is called compiler optimization. Optimize means to reduce the syntax, to reduce the operation, and to minimize the resources and get the efficient results, effective results with minimum utilization of the resources. This is optimization. So in computer science, in programming, what will be the optimization? With less number of code, with less memory space, with less processing time, you get the result.
This is optimization in computer science. So compiler construction is a separate course, and compiler optimization is one of the aspect or one of the study area or branch area of that course. So I'm giving you an example. If this is a common sub-expression, f plus d into e plus d into e plus f multiplied by g. So this expression is being represented here, and you can see this expression. This is being represented on a binary tree. So I have already told you that we can represent expressions on the binary trees, and this tree is called an expression tree. So there is a commonality of an expression. As you can see, this expression is common, and this expression. These two expressions are common expressions. Both are doing addition of the two variables f and d, and then multiplying the. However, the operation is a little bit different. Here you are adding the two variables f and d and then multiplying the result with e. So first of all, you will perform d into e. D into e, because you know the operator's precedence. So d will be multiplied with e, and then f will be added. So this expression is written a little differently. However, as you know that this expression is within the parenthesis, and the operator precedence will be applied. D static e will be executed first, and then f will be added. So in meaning, these two expressions are written a little differently. However, their processing, their working will be the same. Their result will be the same. So these two are the common expressions. And these two common expressions are represented here in this part and in this part. So if you want to optimize your compiler, so you can solve this expression, the whole expression, by you can solve this whole expression by using this one of the subtree. This one of the subtree can utilize your whole expression. You can see compiler optimization, common expression. So from here you have this common expression, and this will be giving result to this section as well and to this section as well, and then it will be multiplied further with the operand g. So this kind of a tree, it is not a binary tree, it is not a binary search tree, it is called a graph, because you have multiple paths in this, and this kind of a diagram is called a graph. Clear? Any question? G, is it clear to you? Yes, sir. Okay. So we are discussing the usage of the applications of binary trees or binary search trees. Then another usage or application of the binary tree is Huffman encoding. It is about almost 50 or 55 years old technique, Huffman encoding, very early encoding technique. What is encoding? Encoding is a technique of compression.
You know that if you want to email me some data and the size of the attachment is more than 50 MB, so the browser will take, the computer has to utilize much memory, much internet resources, network resources to transfer that file to the receiver. So if you apply the compression technique, you can reduce the size of that file 50%. Like you can reduce the size from 50 MB to 25 MB, 70 MB to 35 MB. And even you can reduce the size much more. However, if I consider here, if you reduce the size 50%, then what you are doing, you are compressing the data, you are applying compression. So Huffman is the early compression technique, and this is called Huffman encoding. Huffman code is method for the compression for standard text documents. And this only compresses text documents, not your videos, not your audios. Now you have images, you have plenty of data types, like your video files, like your, and you have different types of video files as well. Then you have your audio files. So Huffman encoding, the early technique was only used for the compression on the text documents. Text documents, you know what are the text documents. It makes use of a binary tree to develop codes of varying lengths for the letters used in the original message. Huffman code is also part of the JPEG image compression scheme. Later on, you have this JPEG. JPEG is one of the type of the image, like you have TIFF, like you have different image schemes. So JPEG is one of the image compression scheme, and this is also based on the Huffman encoding. The algorithm was introduced by David Huffman in 1952. So this is more than older, when about 70 years, you can say 60 to 70 years, 70 years old, almost. So the algorithm was introduced by David Huffman in 1952 as part of a course assignment at MIT. Massachusetts Institute of Technology. There, David Huffman was teaching course of compression or encoding, and or maybe some other course of digital system or something like that. And there, in an assignment, in a course assignment, he introduced this algorithm of, which is called Huffman encoding. And why we are discussing this here, because this is based on, this is using binary tree. Now these were some of the applications of the binary tree. Mr. Muhammad Shahroz, you are creating disturbance in the lecture. And Mr. Muhammad Shahroz, you are absent for today. You will be marked as absent. So we were discussing various applications of the binary trees, and you can search the applications of the binary trees on the internet. You have plenty of applications of the binary trees. So
from the website I have told to you, that is Geeks for Geeks, applications of binary trees. So it is, these binary trees are not just being utilized in, they are not just being only utilized for searches. However, they have other purposes as well. And these are the various applications of binary search trees. You can study this article from the following website, Geeks for Geeks. So if you have any question related to this part of the lecture, you can ask. So we have finished the applications of the binary trees. Now let's talk about some mathematical properties of the binary trees. Property 1, this property, I have included some of the properties of the binary trees in these lectures. However, you have plenty of properties. If you are interested, you can find them from your book or from other sources as well. So properties of the binary tree. The very first property is a binary tree with n internal nodes has n plus 1 external nodes. So what is an internal node and what is an external node? Here, this example will explain you what is an internal node and what is an external node. So this is a binary tree with n internal nodes. This binary tree having A, B, C, D, E, F, G. So the number of nodes here are internal nodes. They are called 9. So you can count them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you can see the nodes represented in the green color. They are called internal nodes, and they are totally in. They are in total 9. You can count them from A to F. G. सर काइंडली स्क्रीन रिफ्रेश कर दें हम मैं एनकोडिंग पे भी खड़े हैं मेरे पास स्क्रीन रिफ्रेश है, ये आपकी डिवाइसेस का इशू होता है, ठीक है, आपकी डिवाइसेस का इशू होता है। चले मैं दोबारा से, आप मोबाइल पे सुन रहे हैं लेक्चर? सर आज मोबाइल पे सुनो, वैसे लैपटॉप पे सुनता हूँ। सर मेरा भी इशू आ रहा है। Due to limited resources on the mobile phones, मेमोरी जो है, स्पेस जो है वो कम होती है, इसलिए मोबाइल फोन्स में ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब देखें जी, यस सर अब ठीक है, ठीक है जी। So we have completed the applications of the binary trees. Now we will be talking about some of the mathematical properties of the binary trees. And these mathematical properties are, the very first property is a binary tree with n internal nodes has n plus 1 external nodes. And this is a property which will always be valid for the binary trees. So here this example explains the working of this property. If you count the number of nodes in the green color, then they are 9. These are the internal nodes, and they are 9 in number. They are called internal nodes. And the nodes represented by the dark square,
by the black square, they are called external nodes. They are actually the leaf nodes, or the nodes which are the points where we can connect some nodes. These are the points where we can connect some extra nodes to the tree. These are the points where we can connect some other nodes. However, they are not being present here. So that's why we have represented them with a dark square, with a black square. And these points where we can insert the new nodes, they are called external nodes. And if you count these black squares, they are in number, they are 10. If you count them, G. Yes, sir, 10. So now you know what is an internal node and what is an external node. Internal node is the actual node being present on a binary tree, and the external node, they are the points where we can insert the new nodes. So जो possible points हैं, देखिए B का left, B के left subtree में D है, B का right subtree null है. तो ये वो null points हैं. These are the null points where we can insert the new nodes, where there is a possibility to insert the new nodes. That kind of a place, that kind of a node is called external node. So now you know what is an internal node and what is an external node. Let's discuss the property. The property was that if a binary tree having n internal nodes, it must have n plus 1 external nodes. So n means 9 nodes, and n plus 1 means 9 plus 1 and 10 external nodes. So this property is valid if you observe this example, and now you know what is an internal node and what is an external node. External nodes are the null points, the possible points where you can insert a new node. Now the second property is a binary tree with n internal nodes has 2n links. So this is another property. If you have a binary tree with n internal nodes, now you know what is an internal node. अगर एक binary tree है, उसके n internal nodes हैं, तो उसमें 2 multiplied by n links होती हैं. And those links are n minus 1 links to internal nodes and n plus 1 links to external nodes. So this is the statement of this property of the binary tree. Now let's try to understand this and prove this. Now here you have this diagram, and in this diagram, the green color, the nodes shown to you in the green color, they are the actual nodes, and they are called the internal nodes. And the black square, the nodes represented with these black squares, they are called the external nodes. You already know this. Now the link from A to B, from A node to B, from A node to C, and then C to F, all of them, they are represented by this you can say a red color. So they are called links. They are called the links. These links, if you count the links, then and study the statement, a binary tree with n internal nodes has 2n links. So if you count the links, how many links you have here? Please 19. Count the links. 19 links. जी कोई और स्टूडेंट भी बताएं टोटल लिंक्स कितने हैं? लिंक्स वो पाथ है जहां से आप एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है. अब हम टोटल लिंक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो हाउ मेनी टोटल लिंक्स यू हैव हियर इन दिस बाइनरी ट्री? सर 18 है सर. 18 है जी, ठीक है. 19 नहीं है, 18 है.
टोटल लिंक्स कितने हैं? 18 है। और फार्मूला क्या है टोटल लिंक्स का? 2n। n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं। नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हैं? 9 है, ऐसा ही है। 9 है सर। तो 2n का मतलब है 2 multiplied by 9, so you have 18 टोटल लिंक्स, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखें ये जो टोटल लिंक्स हैं आपके पास 18, इसमें से फार्मूला क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी इज सेइंग दैट इंटरनल नोड्स links to internal nodes, they will be n-1। अब काउंट करें जी इंटरनल नोड्स को, जो लिंक्स जा रहे हैं, जैसे ए से बी है, बी से डी है, डी से आगे जो लिंक जा रहा है वो इंटरनल लिंक नहीं है। ठीक है, डी से जी में जो लिंक जा रहा है वो इंटरनल है। ठीक है, सो आपने इंटरनल लिंक्स को काउंट करना है। इफ यू काउंट देम दे विल बी 8, and the property says that if the internal nodes are 9, then n minus 1 will be the internal link. So 9 minus 1, 8. So 8 हमारे पास क्या है? इंटरनल लिंक्स हैं जो कि इंटरनल नोड्स की तरफ पॉइंट करते हैं। So now you have the external links, these links pointing towards the external nodes, internal से external की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये लिंक्स कितने हैं? अगर इनको आप काउंट करें तो ये हमेशा n+1 होंगे, यानी 9+1 इस एग्जाम्पल के लिए ये 10 होंगे। ठीक है, और अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करें तो आपके पास 2n टोटल नंबर ऑफ लिंक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, so I hope you have understood this property as well. ये समझ आ रही है आपको? सर ये एक्सटर्नल लिंक्स जो इसके अंदर हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट के साथ अटैच हैं वो है ना? जी जी वही है। जी सर 10 ही हैं। जी, any question related to this, then I will move forward. Okay, ji, you people have no question. It means you have understood the two properties, and these two properties, why I'm teaching you this, because these two properties are very important in understanding another kind of a binary tree, which is called threaded binary tree. क्या कहलाता है वो? Threaded binary tree. AVL ट्री हमने पढ़ा, अब हम एक नए टाइप का ट्री पढ़ रहे हैं जिसे हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है, सो थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो होता है, ऐसा ट्री जिसमें इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स भी होते हैं और इंटरनल लिंक्स भी होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं, ऐसा ट्री थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाता है। और इसको समझने के लिए डिटेल में हम अगली 1 से 2 स्लाइड्स बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो वेट अप टिल देयर। सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ट्री, no, this is the same property. A binary tree with n internal nodes has 2n links, n minus 1 links to internal nodes and n plus 1 links to external nodes. In every rooted tree means a tree having a root node with starting with the root node. Each node except the root has a unique parent. Now there is another property. In every rooted tree, it means that a tree having its root node, each node except the root node has a unique parent. Every link connects a node to its parent. So there are n minus 1 links connecting internal nodes, because root is not connected to some other node. Root is the grandparent, you can say, the grandparent node, because it is the starting point of the tree.
So it is not being connected. So that's why we can, why we say that n-1 links connecting to internal nodes. This is because root is not connected to its predecessor. Similarly, each of n+1 external nodes has one link to its parent. Thus, n-1 plus n+1 equals to 2n links. So how we can say there are 2n links? This is proved mathematically as well. If you add the formulas for the internal nodes plus external nodes, then you will get the 2n links. N plus 1 minus 1 will be cancelled out, and you have 1n plus 1n equals to 2n links. Now let's talk about the threaded binary tree. So in many applications, if you recall your previous knowledge of the binary trees, and especially the traversing schemes you have studied, in many applications, binary tree traversals are carried out repeatedly. So in many applications, binary tree traversals are carried out repeatedly. You need traversing of the binary tree again and again for different purposes. The overhead of stack operations during recursive calls can be costly. So why I am saying that the recursive calls, the recursive functions that you people have utilized for the traversing of the binary tree is costly. What is the reason? Gee, my questions from you. What is the reason why it is costly? Time कंक्रीट रीजन बताएं जी, सॉलिड रीजन बताएं. टाइम तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लग रहा है तो तभी वो कॉस्टली है. देखें, जब हमने रिकर्जन को यूज किया था for the traversing of the binary trees, so at that moment we have just utilized a few commands. ठीक है, 2 से 3 लाइन या 4 लाइन का हमने कोड लिखा था और हमारे पास वो स्टैक जो है, सॉरी, वो जो बाइनरी ट्री है वो ट्रेवर्स हो जाता है. ठीक है, और वो रिकर्जन को यूज करता है, रिकर्सिव फंक्शंस को. कोड वाज वेरी सिंपल. So why we are saying that it is so costly? सर इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई हमें स्पेसिफिक एलिमेंट सेट करना है तो वो अगर स्टार्ट ऑफ द स्टैक पड़ा हुआ है तो हमें पहले ऊपर से सारे एलिमेंट उठाने पड़ते हैं, फिर जाके हमें वो मिलता है. तो हमें दिस इज नॉट द रीजन. ये रीजन नहीं है जी. कोई और बताएं. एनी अदर स्टूडेंट? Currently I am having how many students? Let me check. 128, 129 attendees are here in the class. Sir, in a recursion tree, each node represents the cost of a single subproblem. Somewhere is a set is of recursion function. Please repeat your answer. Mohtar Rubab, please repeat your answer. Sir, in a recursion tree, each node represents the cost of a single subproblem. No, your answer is not clear and not the reason for this. Any other student?
Any other student? 130 student. No one is responding. So this passive attitude of yours will having significant impacts on your result, especially the marks you will get in your assignments and in your quizzes. They will be badly affected by your attitude, by your response, by your unparticipation in the class. You are not actively participating in the class. So this will have a consequence for you. So we were talking about threaded binary trees, and I was saying that the overhead of stack operations during recursive calls can be costly. Why this is costly? I'm giving you the answer. Please listen it clearly. You know that at two moments when we were discussing the stacks and then when we were talking about the binary trees, I have told you, I have explained you the function call stack. Function call stack, which is an internal mechanism. You are using recursion or not. देखें, अगर आप recursion use करते हैं तो कंपाइलर जो है वो उस रिकर्सिव कॉल को यूज करता है. आप स्टैक यूज नहीं कर रहे, लेकिन जो आपका कंपाइलर है वो स्टैक को यूज करता है. ठीक है, आप स्टैक यूज करें या ना करें, आप चाहे रिकर्सिव कॉल बनाएं या ना बनाएं, स्टैक यूटिलाइज होती है इन द मेमोरी by the compiler. A stack is being developed and all the function calls are loaded to that stack, and in that stack you have the local data of the function, then you have the return statement of the function. So if you call a function and again, the stack will be populated again and again. So this will not only take memory resources, more memory resources, but also this will take more processing time. That's why I'm saying that this is an overhead. This is a cost of the program. You have written just 3 statements. However, those 3 statements are internally utilized by the compiler, and the compiler has to work a lot for resolving, for producing the result of those 3 or 4 statements, because you are using recursion, and for recursive calls you are using the recursive functions, and whenever a function is called, it will be using a stack for its operations to be completed, and that stack is populated by the compiler, created by the compiler, and populated by the compiler, completed by the compiler internally. So this is an overhead. In binary trees traversals, so if you are creating, if you are making traversals again and again for various applications, then this overhead is too much costly. This is one of the reasons. Second reason, the next reason is the same would true if you use a non-recursive but stack-driven traversal procedure. So let's suppose I'm saying that, okay, recursion is very costly, I will not use it. So now what to do? So we had that example earlier in the
traversing of the binary trees, non-recursive and recursive. So if I'm using a non-recursive approach, then still I have to make a stack-driven traversal procedure because I have to make my own stack. रिकर्जन में तो ये होता है कि स्टैक जो है वो इंटरनली कंपाइलर बना रहा होता है, लेकिन जो आप नॉन रिकर्सिव तरीके से ट्री को ट्रेवर्सल करने की कोशिश करते हैं उसमें आपको खुद एक्सप्लिसिटली स्टैक बनाना पड़ता है और उस स्टैक के अंदर फंक्शन कॉल होता है या स्टैक जब भी पॉपुलेट होगी तो ट्रेवर्सल प्रोसीजर के लिए तो स्टैक जो है वो ज्यादा मेमोरी को यूटिलाइज करेगा और उसमें डेफिनेटली टाइम भी ज्यादा लगेगा. सो आप अगर रिकर्जन यूज करें या नॉन रिकर्सिव स्टैक ड्रिवन ट्रेवर्सिंग प्रोसीजर अप्लाई करें, then it is costly in both ways. So this is one of the drawback of the traversing techniques those we have studied for the binary trees. These are the drawbacks. Keep remember them. It would be useful to modify the tree data structure which represents the binary tree so as to speed up, say, the in-order traversal process, make it stack free. So देखें अब हमें क्या करने की जरूरत है. हमें चाहिए कि हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास जो ट्रेवर्सिंग है, स्पेशली इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है, उसका प्रोसेस फास्ट हो जाए और उसको फास्ट करने के लिए, उसको कम रिसोर्सफुल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे स्टैक फ्री बनाना होगा कि वो किसी भी सूरत में जब भी वो ट्रेवर्सिंग करे स्टैक को यूज ना करे. ठीक है. So how we can do that? So the goal is to make it stack free. The traversing process, we have to achieve the traversing. However, it should be stack free. Orderly, most of the pointers fields in our representation of binary trees are null. So if you see a binary tree, अगर आप इस बाइनरी ट्री को देखें, लेट्स सपोज हम इसी बाइनरी ट्री की बात करते हैं, तो ये देखें बाइनरी ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री जिसका एक रूट नोड होता है और उसका लेफ्ट सब ट्री होता है और राइट सब ट्री होता है. ठीक है, ये एक बाइनरी ट्री है. अब इस बाइनरी ट्री के अंदर जो इंटरनल नोड्स हैं वो 9 हैं. ठीक है, इसी तरह इंटरनल लिंक्स जो हैं वो n-1 है यानी 8 हैं. अब आप देखें इन लिंक्स को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे जी, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए हम क्या यूज करते थे जी. So what we were using for the traversing of these nodes in programming, in C++ programming, what we were using? जी फैसल नजीर, make it silent. आपकी वजह से disturbance create हो रही है, so make it silent. Some other student can respond. The CRs of the 4 sections, all of them are available, they are online. आप बताएं, कोई भी CR बता सकता है किसी भी सेक्शन का, अपना नाम बताएं और सेक्शन बताएं. C++ प्रोग्रामिंग में हम इन नोड्स को कैसे ट्रेवर्स करते थे, कैसे विजिट करते थे, what we were using? सर हम रेफरेंस नोड बनाते थे, उसके जरिए करते थे. क्या आप CR हैं? नो सर, सॉरी.
चलें अपना नाम बताएं. सर मोहम्मद अशाम. Muhammad Ihtisham, your answer is that we were using what? Reference? यस सर, रेफरेंस नोट बनाते थे, उसके सर्च करते थे. Ji, any other answer? Any other student? All of you have equal opportunity to answer any of the question and to raise any question and to ask any question. All of you are equal. नोट टाइप पॉइंटर्स बनाते थे हम उसके Sir, by using pointers. Yes. देखें हमने दो पॉइंटर्स बनाए थे, एक P और Q, और इनिशियली दोनों रूट पे पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स we can visit these nodes, we can traverse these nodes for various purposes, ठीक है. और वो ट्रेवर्सिंग की टेक्निक्स हमारे पास क्या थी? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. So you can perform those techniques. So now if you see this binary tree, here you have these black squares. These are called external nodes. So ये जहां जहां external nodes की possibility है, it means के there are some null pointers in this. So and they are being wasted. So can we utilize those null pointers? Yes, we can do that. So and let's see how we will be doing this. So if you see, if you have already seen that binary tree, ordinarily most of the pointer fields in our representation of binary trees are null. So each node, two pointer variables representing its left subtree and its right subtree. So if you have, if a node is a leaf node, then it is having no left subtree, no right subtree, no left node, no right node. So it means the pointers, the two pointers, they are null. देखें जब भी हमने एक नोड फैक्ट्री की क्लास की हमने बात की थी, जब भी हम नया नोड क्रिएट करते हैं तो हम उसका लेफ्ट सब ट्री भी देखते हैं और राइट सब ट्री भी देखते हैं, और दोनों को इनिशियली हम नल रखते हैं, ठीक है. जैसे ही हम नया नोड क्रिएट करते हैं नोड फैक्ट्री क्लास की मदद से, तो वो नोड जो होता है उसका इनिशियली उसका लेफ्ट सब ट्री भी नल होता है और राइट सब ट्री भी नल होता है. इसका मतलब ये है कि वहां पे दो नल पॉइंटर्स अवेलेबल हैं. अच्छा, वो नल पॉइंटर्स यूज नहीं हो रहे. अगर हम उनको यूज करने की कोशिश करें तो ये जो अप्रोच है ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री की अप्रोच है, ठीक है. लेट्स सी दिस अप्रोच. Since every node except the root is pointed to, there are only n minus 1 non-null pointers out of possible 2n for an n node tree, so that n plus 1 pointers are null. So जो external links हैं आपके, जो कि n plus 1 है, और external nodes को जो point कर रहे हैं, और external nodes ही वो null nodes हैं जिनको null pointers की मदद से represent किया जा रहा है. So there are n plus 1 null pointers available in every binary tree. If you make it in the, if you convert it into the C++ program, then there will be n plus 1 pointers available and they are null pointers. So you have to utilize them. Let's see this diagram for the threaded binary tree. You have internal nodes 9, you have external nodes 10. So the property that we have studied today, we are using those properties for the threaded binary trees. So the internal nodes 9 and the external nodes are 10. And what are the internal nodes and what are the external nodes? You know that.
The threaded tree data structure will replace these null pointers with pointers to the in order successor, predecessor of a node as appropriate. अब देखें जितने भी हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर, किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर नल पॉइंटर्स हैं, अगर उन्हें हम पॉइंट करना शुरू कर दें, कहां पे, किस तरफ, इन ऑर्डर सक्सेसर की तरफ या प्रीडिसेसर की तरफ। अब आपको पता है इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दिस। जब हमने डिलीशन के केसेस पढ़े थे बाइनरी ट्री के लिए, ठीक है, और जब हमने रोटेशंस को अप्लाई किया था, तो उस वक्त मैंने आपको इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में बताया था कि वो कौन से नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने नल पॉइंटर्स को इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर की तरफ पॉइंट करना शुरू करें, तो ऐसा ट्री जो होगा वो थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाएगा। Such kind of a tree is called a threaded binary tree, a threaded data structure. Why? Because we are utilizing the null pointers of the binary tree and we are directing them to the in order successor or the predecessor of a node. देखें, let's suppose एक node है आपके पास, ये इस ट्री की हम बात करते हैं। Let's suppose we are on the node, इसमें देखें आपके पास A जो है वो रूट नोड है, ठीक है। A क्या है आपके पास, रूट नोड है। अब देखें, लेट्स सपोज मैं इस वक्त हूं नोड B पे। नोड B का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा जी? What is the in order successor of node B? जी, B का इन ऑर्डर सक्सेसर D होगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट नोड जो B के बाद आता है वो D ही है, ठीक है। सो B का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, D। इसी तरह B का प्रीडिसेसर कौन है A सर जी? A. A। सो अगर मैं किसी भी नोड के अंदर मौजूद पॉइंटर्स को, नल पॉइंटर्स को पॉइंट करूं टुवर्ड्स इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड एज अप्रोप्रिएट, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ पॉइंट करूं, किसी एक तरफ, या इन ऑर्डर सक्सेसर की तरफ या प्रीडिसेसर की तरफ, then such kind of a binary tree, the resultant binary tree is called threaded binary tree, ठीक है। और वो जो पॉइंटर जब जहां पॉइंट कर रहा होगा उसे हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है, थ्रेड। We will need to know whenever formerly null pointers have been replaced by non-null pointers to successor, predecessor nodes, since otherwise there is no way to distinguish those pointers from the customary pointers to children. देखें, हम उन पॉइंटर्स को, नल पॉइंटर्स को पॉइंट तो कर देंगे उनके प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर की तरफ, लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नोड जो है वो नल नोड है? क्योंकि इन नल पॉइंटर्स की वजह से हमें ये भी तो पता चल रहा था कि ये जो नोड्स हैं इनके पॉइंटर्स नल हैं, इसलिए नल हैं कि ये लीफ नोड्स हैं। सो क्या लीफ नोड को अब हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है? क्या आंसर है आपके पास इसका? एनी आंसर? डू यू हैव सम आंसर टू दिस क्वेश्चन? सर इसका इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं होगा, लीफ नोड होगा। नहीं, वो लीफ नोड तो होगा, लेकिन उसका जो लीफ
नोड है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों नल होते हैं, ठीक है, और वो नल पॉइंटर्स की मदद से हम बता रहे होते हैं। अब नल पॉइंटर्स को हमने पॉइंट करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर की तरफ। तो अब वो जो पॉइंटर्स हैं वो लीफ नोड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग के बारे में पढ़िएगा, व्हाट इज फ्लैग इन प्रोग्रामिंग, इन C++ प्रोग्रामिंग। ये आपका टास्क है जी। C++ प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लैग्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पर्पस क्या होता है उनका। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हम 2 फ्लैग बनाएंगे, ठीक है। एक फ्लैग ऐसा होगा जो बताएगा कि अब इस वक्त आप लीफ नोड को चेक कर रहे हैं या आप थ्रेडेड बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपने लीफ नोड की प्रॉपर्टी को ऑन किया, लेट्स सपोज दैट इज फ्लैग 1, तो उस फ्लैग 1 की कंडीशन में दोनों पॉइंटर्स जो हैं वो एज अ नल बिहेव करेंगे, ठीक है। और अगर आपने फ्लैग 2 की प्रॉपर्टी को ऑन किया है, then they will be pointing towards the successor or the predecessor nodes. ठीक है, so you have programmatically you have to introduce these flags for achieving both of the situations, for resolving both of the situations, for the leaf node and for the threaded binary tree. Now let's see this example. And by this example, we will be trying to understand what is a threaded binary tree. So as you can see in this example, you have some nodes 14, 15, 18, 20. And you have this right subtree. 14 is the root node. And in right subtree, you have nodes 15, 18, and 20. And in the left subtree, you also have some nodes. However, these nodes are represented by the triangular notation. ठीक है, उसे हमने हाइड कर दिया है और ट्री को मुख्तसर रखने के लिए, स्मॉल रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए हमने ये नोटेशन यूज की। हमने सिर्फ राइट सब ट्री ली है, ठीक है। अब इस ट्री के अंदर एक नया नोड इंसर्ट करना चाहता हूं और वो नया नोड क्या है, 16 है, ठीक है। अब इससे पहले अगर हम इस ट्री को देखें 14 जो है उसके बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 18 आ रहा है और 18 के बाद 20 आ रहा है। 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर जो है वो क्या है आपके पास, 15 का 18 है, ठीक है, और 18 का फिर 20 है। लेकिन अगर आप 15 का प्रीडिसेसर देखें तो वो क्या है, 14। देखें अब 15, इफ यू आर एट द नोड 15, रूट नोड तो कनेक्टेड है, ठीक है, उसके दोनों जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं, दोनों इंटरनल नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। 15 को राइट सब ट्री में और लेफ्ट सब ट्री में भी वो किसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जो 15 नोड है, इफ यू सी दिस, यू हैव इट्स लेफ्ट सब ट्री नल, यहाँ पे एक नल पॉइंटर है। उस नल पॉइंटर को देखें आपने क्या किया है, पॉइंट किया है टुवर्ड्स 14, बिकॉज 14 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 15। इसी तरह 18 का जो लेफ्ट पॉइंटर है उसे आपने 15 को पॉइंट किया क्योंकि 15 प्रीडिसेसर है 18 का। इसी तरह आपने 20 के प्री नल पॉइंटर को आपने पॉइंट किया है लेफ्ट नल पॉइंटर को 18 के साथ, और 20 का जो राइट पॉइंटर है वो स्टिल नल है। ऐसे ही है, दिस डायग्राम टेल्स अस दिस। सो हमने वो जो पढ़ा था कि नल पॉइंटर को या आपने इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर की तरफ पॉइंट करना है, तो यहाँ हमने प्रीडिसेसर की तरफ पॉइंट किए हुए, ठीक है, नल पॉइंटर्स।
क्योंकि इन ऑर्डर सक्सेसर के पास हम इंटरनल लिंक के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव इंटरनल लिंक्स अवेलेबल। नाउ लेट्स सपोज यू वांट टू इंसर्ट दिस न्यू नोड 16। अब देखिए नोड 16 कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, कहाँ पे इसकी अप्रोप्रिएट स्पेस कहाँ पे? जी सर 15 के राइट साइड पे। 15 के राइट साइड पे आना चाहिए, लेकिन जो 15 का राइट साइड है वहां पर 18 पहले से है। 15 के राइट सब ट्री में तो 18 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये 18 के पास आएगा और 18 के लेफ्ट में इसको प्लेस होना चाहिए, ऐसे ही है। यस सर, क्योंकि उससे लेस है। लेकिन 18 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसका जो पॉइंटर है वो ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है उसके प्रीडिसेसर की तरफ। तो जब आप देखें नया नोड क्रिएट करते हैं, नया नोड क्रिएट होता है नोड फैक्ट्री से, तो उसमें सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है? नोड इटसेल्फ क्रिएट होगा, ठीक है। देन उसकी प्लेसमेंट की बात आएगी कि उसे कहाँ प्लेस होना है, ठीक है। देखें ये नोड प्लेस होना चाहिए 18 के लेफ्ट सब ट्री में, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस होने चाहिए? पहला ऑपरेशन कि 16 का प्रीडिसेसर क्या बनता है? 18 का प्रीडिसेसर भी 15 है और 16 का प्रीडिसेसर भी 15 है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 16 का जो लेफ्ट नल पॉइंटर है, जब भी नया नोड क्रिएट होता है उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। ये इसको बनाता है एक लीफ नोड, ठीक है। अब 16 का लेफ्ट सब ट्री का पॉइंटर जो है इसे पॉइंट करना चाहिए इसके प्रीडिसेसर को स्टेप 1 में। सो इसका प्रीडिसेसर 18 का भी 15 है और 16 का भी क्या है, 15 ही है, ठीक है। तो 16 जो है वो अपने प्रीडिसेसर को पॉइंट करेगा, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि जो नया नोड है उसे हमने नाम दिया टी का, और पी वो पॉइंट है जहां पे पी जो है वो पेरेंट है 16 का, ठीक है। और ये इस पेरेंट के लेफ्ट में अटैच होना चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो 16 का राइट सब ट्री है, राइट पॉइंटर है, दैट विल बी pointing to the 18, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए? देखें साथ साथ हम इस कोड को भी देखते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, टी एरो लेफ्ट, टी का लेफ्ट देखें, टी क्या है, 16 है, ठीक है। टी का लेफ्ट जो है वो कहां पॉइंट कर रहा है, पी एरो लेफ्ट। इस वक्त जो पी का लेफ्ट है, पी का लेफ्ट क्या है, पी का लेफ्ट भी 15 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और टी के लेफ्ट को भी 15 को पॉइंट करना चाहिए, बिकॉज वी आर सेइंग दैट इन स्टेप 1 टी एरो लेफ्ट इज इक्वल टू पी एरो लेफ्ट, कॉपी द थ्रेड। सो ये जो थ्रेड है 18 का लेफ्ट थ्रेड जो कि 15 को पॉइंट कर रहा है, वी आर कॉपिंग दिस थ्रेड इन दी 16's लेफ्ट। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, टी एरो लेफ्ट, टी एरो लेफ्ट थ्रेड, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो टी का यानी 16 का जो लेफ्ट नल पॉइंटर आपने पॉइंट किया है 15 की तरफ, ये एक थ्रेड है, टी एरो एल टी एच, दिस इज अ थ्रेड। सो ये क्या हम कह रहे हैं, ये हम फ्लैग ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि ये एक थ्रेड है। उसके बाद थर्ड स्टेप में टी एरो राइट, टी 16, टी स्टैंड्स फॉर 16, टी का जो
राइट पॉइंटर है दैट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट्स पेरेंट, दैट इज 18. दिस इज थर्ड स्टेप. P is successor of T. P is successor of T. देखें अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? रूट इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है जी? सर लेफ्ट नोड एंड राइट जी, तो लेफ्ट का लेफ्ट में आपके पास 16 है और 16 के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 18. तो 18 जो है वो इसका सक्सेसर है, ठीक है. सो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? टी एरो राइट, टी का जो राइट पॉइंटर है जो कि एक थ्रेड है उसे आप पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स 18 एंड देन यू आर सेइंग दैट टी right thread is equal to TRTH is equal to thread. T arrow RTH is equal to thread और ये भी एक थ्रेड है, ठीक है. ये भी एक इंटरनल लिंक नहीं है बल्कि ये एक थ्रेड लिंक है, ठीक है. उसके बाद P एरो लेफ्ट. अब जो P का लेफ्ट था वो पॉइंट कर रहा था, वो एक थ्रेड था और वो पॉइंट कर रहा था 15 को. चूंकि अब उसके लेफ्ट में एक नया नोड आ चुका है तो अब 18 के लेफ्ट को पॉइंट करना चाहिए T पे, ठीक है. और P एरो लेफ्ट इज इक्वल टू T अटैच द न्यू लीफ नोड. एंड अब हम फ्लैग के जरिए बताएंगे कि ये जो है ये किसका लीफ नोड है या चाइल्ड नोड है, ठीक है, 18 का. P एरो LTH इज इक्वल टू चाइल्ड. देखें अब स्टेप 6 में टी जो है वो पी के साथ कनेक्ट हो चुका है विद एन इंटरनल लिंक बिकॉज इट इज द चाइल्ड ऑफ द नोड 18. सो दिस इज हाउ यू विल बी एडिंग थ्रेड्स or inserting new nodes into a threaded binary tree. These are the steps involved. These are the pointers to be readjusted. So I hope you have understood this. If you have a question, you can ask. जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. So these are the 6 steps involved for attaching or for inserting a new node in a threaded binary tree and adjusting the pointers as well. Now let's see this threaded binary tree. अब इस थ्रेडेड बाइनरी ट्री को अगर आप देखें तो इसमें रूट नोड है 14, ठीक है, और लेफ्ट सब ट्री में 4, 3, 9, 7, 5 एंड राइट सब ट्री में आपके पास नोड्स हैं 15, 18, 16 एंड 20. नाउ देखें 3 पे अगर आप आते हैं जो कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग अगर आप फॉलो करें तो 14 से 4, 4 से 3, ठीक है. 3 जो है वो क्या है? 3 इज इन ऑर्डर सक्सेसर. 3 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? 4. सो 3 का जो लेफ्ट पॉइंटर है जो कि नल पॉइंटर है, राइट पॉइंटर है जो कि नल पॉइंटर है, वी आर पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स द नोड 4 व्हिच इज द इन ऑर्डर सक्सेसर. इसी तरह अब 4 के बाद क्या आना चाहिए? इन ऑर्डर सक्सेसर इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में 4 के बाद 5 आना चाहिए, ठीक है. सो अगर 5 आना चाहिए तो 5 तक हम कैसे पहुंचेंगे? वी हैव द इंटरनल नोड्स 4 से 9, 9 से 7 एंड 7 to 5. अब 5 के बाद क्या आना चाहिए? 7. सो 5 का जो लेफ्ट null pointer है, we are making it a thread and pointing towards 7. Then 7 का left point is pointing towards 9. 9 के बाद क्या आना चाहिए आपके पास? 14. So 14 का left thread point कर रहा है 9 का left thread point करेगा 14 को. इसी तरह 14 के बाद इंटरनली आप 15 पे आए. 15 के बाद आप कहाँ पे आएंगे? 18 पे. और 18 के बाद आपके पास 15 के बाद आप 16 पे आएंगे.
इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग को फॉलो करते हुए, और 16 का जो प्रीडिसेसर है वो 15 है, इसलिए ये पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, और 16 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है दैट इज 18, सो द लेफ्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 18, एंड देन 18 के बाद इन ऑर्डर सक्सेसर आपके पास क्या है 20, सो यू विल इंटरनली मूव टुवर्ड्स दैट, और आपके पास जो आपके पास इसका प्रीडिसेसर है दैट इज पॉइंटेड बाय दिस नल पॉइंटर। और अब आप देखें कि 20 जो एक लीफ नोड है इसका राइट पॉइंटर जो है वो स्टिल नल है, और 3 जो कि लीफ नोड है इसका लेफ्ट पॉइंटर स्टिल नल पॉइंटर है। बाकी सबको हमने थ्रेड बना दिया, और इन थ्रेड की मदद से हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। 3 से 4, 4 से 5 इंटरनली, एंड देन 5 से 7, 7 से 9, 9 से 14, और 14 से इंटरनली आप 15, और 15 से आप 16, 16 से आप 18, और 18 से आप 20 इंटरनली मूव कर रहे हैं, ठीक है। So all of the nodes are interconnected and we can successfully traverse the tree by using these threads. अगर हम इन threads को हटा दें, if we remove these threads, then we don't have the option to move or to traverse each tree in the in order traversing way. So we will not be we will not be in a position to perform in order traversing, और keep remember this कि हम यहाँ पे recursion use नहीं कर रहे, stack driven approach को use नहीं कर रहे, so that's why we are making paths with the help of these null pointers, and these null pointers their directivity to the internal nodes is called threads. Let's see this diagram to understand this. देखें 4 in order successor, 3 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए 4, so 3 का in order successor क्या है आपके पास 4, और 4 का in order successor क्या है आपके पास 5, क्यों लेफ्ट मोस्ट नोड इन राइट सब ट्री होता है, ठीक है। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है लेफ्ट मोस्ट नोड इन राइट सब ट्री, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए जी 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 predecessor is the node lies behind of a given node and successor the node lies ahead of a given node. नहीं, ये देखें अब हम इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग आपके पास क्या अप्रोच लेके आती है, आपको सॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड करती है, ऐसा ही है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग आपको सॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड करती है, ऐसे ही है। डू यू एग्री? यस सर। देखिए हमने 3 ट्रेवर्सिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी, और उसमें से एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग ऐसी टेक्निक थी जो कि आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में मूव करती है। तो देखें 3 के बाद क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और 4 के बाद क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 14। सो इन ऑर्डर सक्सेसर की बात हो रही है, ठीक है। 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है 4 है, इन ऑर्डर सक्सेसर की बात कर रहा हूं मैं, प्रीडिसेसर की बात नहीं कर रहा मैं, because we want to achieve the in order traversing, so we need in order successor। और मैंने यही कहा था कि आप नल पॉइंटर्स को इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर की तरफ पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे प्रीडिसेसर की तरफ पॉइंट हो रहा है, देखें 15 का प्रीडिसेसर क्या है 14, 16 का प्रीडिसेसर क्या है 15, ठीक है। 18 का 20 का प्रीडिसेसर क्या है 18, ठीक है। इस तरह से पॉइंट हो रहा है, और 18 का प्रीडिसेसर क्या है 16, ठीक है। So you have this type of paths, you have developed these paths, so the in order successor of 3 is 4, and 4 के बाद आपके पास 5 है,
सो 5 को आप इंटरनली मूव करोगे. यू हैव इंटरनल लिंक्स 9, 9 से 7 और 7 से आप 5 पे आएंगे. और उसके बाद आप 5 से 7 पे कैसे जाओगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को फॉलो करते हुए? दिस थ्रेड लिंक, देन दिस थ्रेड लिंक, देन दिस थ्रेड लिंक, और इस तरह से आप इस ट्री को सक्सेसफुली ट्रेवर्स कर सकेंगे. और आपने इसको एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाया बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग द नल पॉइंटर्स. ठीक है जी? एनी क्वेश्चन? पूरी टेक्निक इन ऑर्डर सक्सेसर Now let's see the routine or the C++ code for the in order traversing, and we call this routine as next in order. If you see the code, tree node static next in order. देखें जो भी हमारे पास नया नंबर आता है 3 के बाद, जैसे 4 था, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, सो उसके लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन को हमने नाम दिया है नेक्स्ट इन ऑर्डर का, और वो ट्री नोड टाइप का पॉइंटर फंक्शन है. पॉइंटर रिटर्न करेगा ट्री नोड स्टैटिक पी, और जो नया नोड होगा वो पी से पॉइंट होगा. ठीक है? इफ पी, रूट नोड से हम स्टार्ट लेंगे और दैट विल बी पॉइंटेड विद द पी. इफ पी एरो RTH, राइट थ्रेड की हम बात करें, अगर पी का राइट थ्रेड एक थ्रेड है, रिटर्न पी एरो राइट. एल्स पी इक्वल्स टू पी एरो right while p arrow left thread is equal to child p equals to p arrow left, return p. So this is the next in order traversing technique or code that we have to follow for the threaded binary tree. So if we can get things started correctly, we can simply call next in order repeatedly in a simple loop and move rapidly around the tree in order printing node labels without a stack. So आप इस पे गौर करें और मुझे जो है ये 5 मिनट की ब्रेक दें, और 5 मिनट के बाद हम अपने लेक्चर को दोबारा रिज्यूम करेंगे. ठीक है? सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स हियर. So be there and we will be right here right after 5 minutes, and और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप फिर पूछिएगा. ठीक है?
Welcome back, dear students. Let's resume our lecture. Before resuming, let me reshare the lecture slides. So we were discussing the in-order traversal of the threaded binary tree. If we can get things started correctly, we can simply call next in order repeatedly in a simple loop and move rapidly around the tree in order printing node labels, say without a stack. So this code that I have explained to you earlier, the next in order function, this is responsible for the traversing of the threaded binary tree without a stack. And in this routine or in this function, which is called next in order, we have the if condition and we have a while loop. And these two decides what is the in order traversing of a threaded binary tree. And this code is based upon this diagram. This diagram. The code is just like this. And we have just put these steps, these 6 steps, by using within a routine that is called next in order, and we have used the if statement, if else statement, and the while loop. So the first statement is if we can get things started correctly, we can simply call next in order repeatedly in a simple loop and move rapidly around the tree in order, printing node labels without a stack. So this is a big achievement that we are printing, we are performing the traversing, in order traversing without using a stack. A stack is always using, if you are using recursion, then a function call stack, and for the stack, a call stack is being populated and it will take too much resources. And it will increase the overhead of the program. And stack will overflow. Yes. If we call next in order with the root of the binary tree, we are going to have some difficulty. The code won't work at all the way we want. Now there is a condition, sorry, there is a situation where this next in order will not work, and that is if we call it with the root of the binary tree. Except to the root, this will work fine. However, if we make it, if we provide the root node as the initial node, and we want to start this next in order routine or function from that root node, then there will be some difficulty. And normally we always start from the root node. So we need a solution for this problem as well. So if we take this code, which we have defined in the next in order routine or function, and we want to apply this on the following example. So देखें root node पे आपके p जो है p pointer initially point कर रहा है, next in order का p pointer point कर रहा है initially root node पे. तो पहली लाइन क्या है कोड की? If p arrow rth right thread, अगर p का right thread जो है वो equal to thread है, then return p arrow right. देखें p का right क्या है? वो thread नहीं है, वो तो क्या है? एक normal link है. ठीक है, ऐसे ही है.
P के राइट पे क्या है 15, और 15 जो है वो एक नॉर्मल लिंक के थ्रू ट्रेवर्स हो रहा है, ना कि आपके पास थ्रेड लिंक है। सो आप एल्स पार्ट की तरफ आएंगे, तो एल्स में क्या होगा, इफ वाला पोर्शन ठीक नहीं है, वो रॉन्ग है, ठीक है। सो इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज पी एरो राइट थ्रेड जो है वो थ्रेड नहीं है, ठीक है, वो एक लिंक है। एल्स P इक्वल्स टू P एरो राइट, तो आप P से P एरो राइट का मतलब है राइट सब ट्री में मूव करेंगे, तो P कहाँ जाएगा, P पॉइंटर 15 की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है। और उसके बाद while लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, व्हाट इज द इशू, 14 के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए 5 जी। देखें 14 के बाद हमें लेफ्ट सब ट्री में 4 पे जाना चाहिए, और 4 से हमें 3 में जाना चाहिए, क्योंकि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग होती है उसमें लेफ्ट मोस्ट नोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो लेफ्ट सब ट्री में आपको मूव करना चाहिए, जबकि आपका कोड जो है, आपकी जो नेक्स्ट इन ऑर्डर रूटीन है वो आपको राइट साइड पे मूव करवा रही है, इसलिए आपका कोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा रूट नोड के हवाले से। तो ये प्रॉब्लम है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई, theoretically बताई, and practically now I have proved that, or we have proved that this code is not going to be working. This is the problem, ठीक है, क्योंकि देखें अगर आप पहली लाइन देखें, if P arrow RTH equals to thread return P arrow right, so P का right जो है वो thread नहीं है, that is a proper link, so else part will be executed, and due to this else part you will be having this part P equals to P arrow right, so the P pointer will move towards the right, and then if you want to still execute the while condition, while P arrow left thread equals to child, so उसको execute करने का फायदा नहीं है। Why? There is no benefit of this because you are moving in the wrong direction. This is the issue. So let's resolve this issue. So I have to open up the lecture slide of lecture number 13. So wait a moment and let me share them as well. So we have this problem with the next in order code that it is not working with the root node. So what we have to do, we have to resolve this situation. And for that purpose, we have to introduce a new node before the root node. देखें रूट नोड के ऊपर एक रूट नोड से ऊपर या उससे पहले हम एक नया नोड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और लेट्स सपोज हम उसे एक डमी नोड या कोई भी वैल्यू देते हैं, डमी वैल्यू, जो कि हमारे कोड को सक्सेसफुली रन करवाएगी, ठीक है। सो हियर यू कैन सी लेक्चर स्लाइड्स विजिबल हैं आपको? नो, दे आर नॉट विजिबल टू यू। No, sir. Okay, okay. Now they are visible? Yes, sir. Okay. So we have to resolve this situation that with the root node or this next in order function is not working properly. The code is not following the right direction. So what is the solution? The solution is that we have to introduce a dummy or any node which is not actually the node of which is not actually the part of this sub tree, which is not actually the part of this tree. However, we will introduce this dummy node and we will connect this
dummy node in such a way that our code will be effectively working even with the root node as well, and we will be moving by this fix. Right after applying this fix, we will be moving in the right direction as well. So let's see. So first of all, dummy node का जो left pointer है या लेफ्ट लिंक है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, रूट नोड 14 पे, ठीक है। उसके बाद इसका जो राइट है वो अपने आप पे पॉइंट कर रहा है, अपने आप को रिपीट करवा रहा है, ठीक है। क्लियर है जी, सुन रहे हैं आप? यस सर। यस सर। ओके, अब ये कौन है जो डिस्टर्ब? बिलाल इरशाद, Bilal Irshad, Mr. Bilal Irshad, 19/174. You are absent for today. Because you have wasted our 2 minutes. Okay, so we have introduced a dummy node before the root node, and this dummy node will be connected in such a way that its left subtree or its left pointer or its left link is pointing towards the root, and the right link is repeating itself. It is again pointing to the dummy, okay? And then it is connected with the, if you see this line, and this line is a yellow line, maybe it is visible or not visible to you. I hope it will be visible to you. क्या ये visible है? यस सर, हल्की हल्की नजर आ रही है। ओके जी जी, तो ये देखें हमारे पास दो नल पॉइंटर स्टिल अवेलेबल हैं जिनका मैंने पहले तस्करा भी किया था, और वो नल पॉइंटर्स 3 का लेफ्ट है और 20 का राइट है, ठीक है। 3 के लेफ्ट को हमने डमी के साथ कनेक्ट कर दिया, और 20 का जो राइट है उसे भी हमने डमी पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। सो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है हमारे पास आ चुका है। अब इस सोल्यूशन पे हम वही कोड जो कि इन ऑर्डर, नेक्स्ट इन ऑर्डर रूटीन है या फंक्शन का कोड है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारा सोल्यूशन या मेथड जो है क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सो लेट्स सी दैट। सो इफ यू सी, तो अगर आप उस कोड को रिमेंबर करें तो आपके पास देखें पहली लाइन क्या थी। लेट मी कॉपी द कोड हेयर, इस कोड को यहां भी प्लेस किया जाए। सो जी अब हम इस कोड को देखते हैं with the following example by the with the help of with the introduction of the dummy node, whether this is working or not. So अगर आप डमी को देखें
तो इस तरह से हमने कनेक्ट करवाया एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लेट्स सी द कोड, लेट्स अप्लाई द कोड. तो कोड क्या है आपके पास? ट्री नोड नेक्स्ट इन ऑर्डर. ये एक लाइन का कोड है, ठीक है. ट्री नोड नेक्स्ट इन ऑर्डर, दिस इज इन दी वन सिंगल लाइन. So now we will be applying the code. So code क्या है? पहली लाइन है if tree node p, then if p, now p जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? डमी पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है. p जो है वो आपके डमी पे पॉइंट कर रहा है जो कि अब रूट नोड है, और ये आपने खुद से एक रूट नोड इंट्रोड्यूस करवाया which is not part of the actual tree. So if p arrow rth is equal to thread, return p arrow right. देखें p का, अगर ये डमी नोड, if this is your p and its first line is thread, so it is not a thread. Its right link is not a thread. तो else part इंट्रोड्यूस होगा और वो क्या करेगा? p equals to p arrow right. तो p जो है दोबारा डमी पे पॉइंट करेगा, ठीक है, राइट पे, ठीक है. देन while p arrow lth equals to, तो अब आपके पास क्या होगा? while p arrow lth equals to child. देखें डमी का चाइल्ड क्या है? 14, और वो लेफ्ट के अंदर है, ठीक है, लेफ्ट के अंदर है. तो p arrow p equals to p arrow left, और तब आप p के लेफ्ट पे मूव करेंगे, ठीक है. p अब कहाँ पॉइंट करेगा? p के लेफ्ट पे, तो p आपका 14 बन जाएगा, ठीक है, और 14 रिटर्न होगा. इस तरह से आप लेफ्ट में मूव करना शुरू कर देंगे, एंड दिस कोड नेक्स्ट इन ऑर्डर विल बी वर्किंग फाइन with the help of with the introduction of this dummy node into this tree. Okay, any question? Now you have another technique. Now you have to modify the next in order function, and you have to introduce this dummy node into that. You have to embed that. So उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने रूटीन का नाम अब क्या रखा है? फास्ट इन ऑर्डर, वाइड फास्ट इन ऑर्डर tree node static p while p equals to next in order of p not equal to dummy, see out p arrow get info. Start the in order traversal by calling fast in order dummy. Now fast in order को आपने कॉल करवाना है और इसको आपने डमी नोड से स्टार्ट दिलवाना है, ठीक है. So you have to start the fast in order call function with the parameter of the dummy node. So it will be started from the dummy node, and in this way it will be working fine, and it will be processing the in order traversal node as well. Now here this is being explained to you. देखें p आपके पास इनिशियली कहाँ पे है? डमी पे है, ठीक है. अब डमी पे पॉइंट कर रहा है, तो आपके पास पहली लाइन क्या है कोड की? अगर आप वहां जाएं, ये तो हमने while के लूप को चेंज किया, ठीक है. पहली लाइन है if p arrow rth equals to thread, return p arrow right. So देखें आपके पास p जो है वो क्या, उसका जो राइट है, क्या वो एक थ्रेड है? नहीं, वो एक थ्रेड नहीं है, इसलिए उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा.
और वापस आप डमी पे पॉइंट करेंगे। देन आपका वाइल पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वाइल में आप क्या कह रहे हैं, p इक्वल्स टू नेक्स्ट इन ऑर्डर p not equal to dummy. Now in this while loop you are checking the more than two conditions. पहली क्या है कि आप नेक्स्ट इन ऑर्डर को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट इन ऑर्डर को कॉल करवा रहे हैं और वो p से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, फिर जो भी उसकी वैल्यू आती है उसे आप p में असाइन करवा रहे हैं और देन राइट आफ्टर असाइनिंग दैट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर into p, then what you are doing, you are making you are doing a comparison that p is not equal to dummy, then see out p arrow get info. तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इन ऑर्डर और फास्ट इन ऑर्डर की मदद से, दो रूटीन्स की मदद से आप सक्सेसफुली जो है इस फंक्शन को रन करवा रहे हैं और अब ये सक्सेसफुली लेफ्ट के अंदर मूव करेगा, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 और 9 और then 14, 15, 16, 18 and 20. So this way the two routines, next in order with the dummy node and the fast in order will working together and resolving the situation where the root node was actually not working properly. ठीक है जी, any question? अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। We have completed the threaded binary tree. What is a threaded binary tree? What is the working principle of a threaded binary tree, and how we can represent, how we can transform a threaded binary tree, its working of the threaded binary tree into the C++ code with the example. Now our next topic is complete binary tree. Complete binary tree. So who is going to tell me what is a complete binary tree? जी, कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने पढ़ा है, क्या होता है? A complete binary tree is a tree that is completely filled with the possible exception of the bottom level. The bottom level is filled from left to right. Different definitions of complete binary tree than an earlier definition we had. The earlier definition could be called a perfect binary tree. देखें, पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्लीट बाइनरी ट्री की, उसमें हमने कहा था कि ऐसा बाइनरी ट्री जिसके तमाम लीफ नोड्स लेवल डी पे हो, ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर। A complete binary tree is such a binary tree whose all the leaf nodes are at level D. So now such kind of a binary tree is called perfect binary tree. देखिए, उसमें कोई भी unfilled points नहीं होते, ठीक है, all the points are finely filled and you have up to the leaf nodes. जबकि एक नॉर्मल कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड तो होता है, लेकिन बॉटम लेवल जो उसका लेवल डी होता है, डेप्थ लेवल होता है, वहां पे हो सकता है कोई एक आध नोड या एक दो नोड मिसिंग हो, ठीक है, स्टिल वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा, लेकिन वो परफेक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। द बॉटम लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Different definition of complete binary tree than an earlier definition we had. The earlier definition could be called a perfect binary tree. Gee, any question about complete binary tree? Now this is an example of the complete binary tree.
और इसमें देखें लेवल डी पे आपके पास कौन से नोड है, एच आई जे, और आपके पास लेवल डी में स्टिल गुंजाइश है एफ के 2 नोड्स, ठीक है, एफ का लेफ्ट सब ट्री, एफ का राइट सब ट्री, और जी का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो 4 नोड्स मजीद अटैच हो सकते हैं। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ये एक परफेक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। और आप देखें कि नोड्स जो अटैच हुए हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ अटैच हुए हैं। यू कैन सी द नोड्स आर अटैच्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हियर। So this is a complete binary tree. This approves the property, the basic properties of a complete binary tree. However, this is not a perfect binary tree, perfect complete binary tree. ठीक है जी? Do you agree? सर इसको परफेक्ट होने के लिए इसके 4 नोड भी आने चाहिए, लीफ नोड, तब परफेक्ट हो जाएगी जी। ये जब 4 नोड्स यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है, और इसका देखें तमाम लीफ नोड, अब ये देखें तमाम लीफ नोड कहाँ पे हैं, इसके लेवल डी पे हैं, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। अदरवाइज ये एक सिंपल कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और सिंपल कंप्लीट बाइनरी ट्री की ये कंडीशन को फुलफिल करता है क्योंकि ये ऊपर के लेवल्स पे कंप्लीटली फिल्ड है, और नीचे का जो लेवल है उसमें भी ये लेफ्ट से राइट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट। इसके जो नोड्स अटैच्ड हैं वो लेफ्ट से राइट हैं, और बॉटम पे कुछ एक्सेप्शन इसको दी जा सकती है कि कुछ नोड्स इसके मिसिंग हो। जी सर ई का लेफ्ट नोड भी तो मिसिंग है। हाँ, ई का देखें राइट नोड, लेफ्ट नहीं, ई का राइट नोड भी मिसिंग है, ठीक है। सो इस तरह से जो एक ट्री होगा वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। गुड, ठीक है जी। Recall that such a tree of height h has between 2 raised to the power h or 2 raised to the power h plus 1 minus 1 nodes. The height of such a tree is thus log base 2 of n, where n is the number of nodes in the tree. Because the tree is so regular, it can be stored in an array. No pointers are necessary. So why we are studying complete binary tree? There is a purpose involved. That's why we are studying complete binary tree and the properties of the complete binary tree. So if you apply this property, recall that such a tree of height h has between 2 raised to the power h to 2 raised to the power h plus 1 minus 1 nodes. तो क्या ऐसे ही हैं, इतने ही नोड्स हैं इसके, 2 raised to the power h, या बिटवीन की बात हो रही है, ठीक है। इसके नोड्स गिने जी, 2 raised to the power h, 2 raised to the power h plus 1 minus 1. नोड्स 9 है। टोटल नोड्स कितने हैं? 9, ठीक है। ट्री की हाइट क्या है जी? ट्री की हाइट बताएं मुझे। 4 1 2 3 4 नहीं, 0 से स्टार्ट होता है, रूट लेवल 0 होता है, 0 1 2 3। सो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, ठीक है। तो हमने कहा है कि 8 से लेकर इसका पॉसिबल जो नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, दैट इज बिटवीन 2 raised to the power h, 2 raised to the power 3 8. सो 2 raised to the power h plus 1 क्या होगा? 16 सर, -1। सो 8 से 15 के दरमियान नोड्स हो सकते हैं इसके, यानी आप रेंज बता रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते बल्कि रेंज ऑफ नोड्स बता रहे हैं, ठीक है। So this is the property of the complete binary tree. Recall that such a tree of height h has between 2 raised to the power h plus 2
2 raised to the power h plus 1 minus 1 nodes. The height of such a tree is thus log base 2 of n, where n is the number of nodes in the tree. Because the tree is so regular, it can be stored in an array. No pointers are necessary. देखें, pointers जो हैं उनको हैंडल करना कोई इतना आसान काम नहीं है. अब तक जो हमने ट्रीज पढ़े हैं, बाइनरी ट्री से लेकर थ्रेडेड बाइनरी ट्री तक, तमाम में हमने पॉइंटर्स को यूज किया है. अब हम चाहते हैं कि हम पॉइंटर्स को यूज ना करें, बिकॉज पॉइंटर्स आर टू मच कॉम्प्लिकेटेड, एंड इफ यू हैव अ सिंगल मिस्टेक in handling a pointer, you can get the wrong results. ठीक है, pointers जो हैं वो problematic हो सकते हैं. So if you want to make your solutions pointers free, then you can store such kind of complete binary trees into an array. However, it should be a complete binary tree. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सारे ही ट्रीज को अरेज पे रिप्रेजेंट कर सकें. दिस इज नॉट पॉसिबल. हाउएवर, a perfect complete binary tree and a complete binary tree can be represented on an array. No pointers are necessary. So we will move forward with this statement. अब देखें, ये आपके पास complete binary tree है और एक हमने array ली है, और ये नीचे देखें आपके पास ये क्या है, array. Array क्या होती है? What is an array? सर ऐसी मेमोरी लोकेशन पे सेम टाइप के डाटा को होल्ड करती है. Contiguous memory location having the same data elements or same data type. So here you can see, you are observing that ये इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 0 है, लेकिन यहां से हम स्टार्ट नहीं ले रहे. ठीक है, हम इंडेक्स 1 से, फॉर आवर easiness we are starting from the index 1 and we are placing the numbers on those indexes. A 1 पे, B 2 पे, C 3, D जो है वो 4 पे, E जो है 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे, 9 पे, I J पे और 10 पे J. ठीक है, तो आप इंडेक्स 10 पे आपने J रखा और आप इंडेक्स यूज कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 10, and you have easily represented this binary tree, this complete binary tree on an array. Now, why we are doing this? We want to observe some properties. We want to achieve some results. For an array element at position I, the left child is at 2i, the right child is at 2i plus 1. देखें, इशू ये है, आपने अरे पे रिप्रेजेंट तो किया, you have represented this complete binary tree on the array, but however we don't know what is the left subtree, what is the right subtree, where is the a जो है, a का लेफ्ट में क्या आ रहा है, a के राइट में क्या आ रहा है. सो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी बनाई. अगर लेट्स सपोज इंडेक्स i जो है, इसको अगर हम कहें कि i है और यहाँ पे रूट नोड या पहला नोड आ रहा है a, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2i पे और राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2i plus 1 पे, एंड द पेरेंट इज एट i divided by 2. ठीक है, पेरेंट जो है, देखें ये i है, इसका 2i क्या आएगा, i की वैल्यू क्या है इस वक्त, इंडेक्स की वैल्यू जी, i की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 सर. 1, तो 2i क्या आएगा हमारे पास, 2 सर. जी 2i हमारे पास आएगा 2. तो 2 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पे वैल्यू b पड़ी हुई है और b ही a का लेफ्ट सब ट्री है, ऐसे ही है. सो ये फार्मूला क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. अब हम आगे भी चलते हैं, इसको देखते हैं. आगे है हमारे पास, और मैंने कहा है कि उसका राइट सब ट्री कहाँ पे होगा, 2i प्लस 1 पे. तो 2i plus 1 क्या आएगा आपके पास,
3 C ऐसे ही है sir. 3, तो 3 पे आपके पास C है और C ही इसका राइट सब ट्री है, ऐसे ही है। लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस फार्मूला से। इफ I is the root node, 2I will be its left subtree and 2I plus 1 will represent its right subtree, ऐसे ही है। So this formula is initially working. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो चाइल्ड नोड है C, लेट्स सपोज C का पेरेंट क्या है, यहां से अरे से मुझे बताएं। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो इसके लिए फार्मूला ये है कि इसके लिए फार्मूला है आपके पास ये I डिवाइडेड बाय 2, I डिवाइडेड बाय 2। सो I की वैल्यू इस वक्त I की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो I का मैं पेरेंट ढूंढना चाहता हूं जो कि C है, ठीक है। C का पेरेंट, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, मॉड 3 यानी I जो है I डिवाइडेड बाय 2। सो I को अगर आप 2 से डिवाइड करें और उसका मॉड लें तो क्या वैल्यू आई? सर 1.5 आएगी, मगर ये 1 नहीं रखेगा अगर इंटीजर हाँ है। जी, ये 1 रखेगा, इसको क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो I का पेरेंट कहाँ पे है, 1 पे, A, ऐसा ही है। तो ये प्रॉपर्टी भी वैलिडेट कर रही है, ठीक है। इसी तरह आप इसको फर्दर अप्लाई करें। अगर आप D पे जाते हैं तो D का लेफ्ट क्या है, नाउ I इज एट D, D का लेफ्ट है E, D का लेफ्ट है सॉरी H, और इसका फार्मूला क्या है 2I। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, ये देखें ये इसका लेफ्ट बन रहा है, ऐसे ही है। इसी तरह अगर आपने D का यानी इंडेक्स 4 का जहां पे आपका I है इसका राइट ढूंढना है तो 2I प्लस 1 होगा यानी 9। इसी तरह अगर आप आ चुके हैं यहाँ पे 10 पे और आप कहते हैं 10 का पेरेंट क्या है, I की वैल्यू अब क्या है 10, तो 10 का पेरेंट क्या है 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, I डिवाइडेड बाय 2, सो 5, 5 पे क्या वैल्यू है E, सो देखें J का पेरेंट क्या है E, तो ये प्रॉपर्टी वैलिडेट कर रही है, ऐसे ही है। सो बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज देखें हम ये कह रहे हैं कि A का लेफ्ट सब ट्री B और A का राइट सब ट्री C, and they are respectively represented by 2I and 2I plus 1, and the parent of D is B and it is represented by I divided by 2, और उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है विदाउट डेसिमल वो आपने लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये पूरे अरे के ऊपर ये फार्मूला वर्क करता जाएगा और आपके पास लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी कंप्लीट बाइनरी ट्री का इफेक्टिवली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं देखें कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम देखते हैं और जो अरे के इंडेक्सेस हैं, ठीक है, जो कि मैंने 1 से स्टार्ट किया है, और अगर उन इंडेक्सेस को मैं अप्लाई करता हूं तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास किस किस्म की ये ट्रेवर्सिंग आ रही है, अरे इंडेक्स जो है जिसको मैंने हर लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये मेरे पास लेवल ऑर्डर में अरे को ये कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ऐसा ही है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग? आप डू यू रिमेम्बर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग? Yes, sir. Yes, sir. Level So to level. it's just like your level order traversing, and आप जो हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री को लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग की फॉर्म में एक अरे के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अरे का जो इंडेक्स है वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग को फॉलो कर रहा है। सो आपको ट्रेवर्सिंग की अप्रोच भी, सो यू आर गेटिंग दी ट्रेवर्सिंग अप्रोच बाय यूजिंग array for the implementation of a complete binary tree, and you can easily represent the left subtree and the right subtree as well.
by using an array for the implementation. Why we are using an array? Because array is the most simple data structure available in every programming language for the solution and for the implementation of a problem. So array को हम इसलिए यूज कर रहे हैं. Array is the most simple method. Pointers के साथ implement करना that is difficult. और इसी तरह जो बाकी मेथड्स हैं रिकर्सिव कॉल्स और वो सब वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन अरे के साथ आप सिंपल कंप्लीट बाइनरी ट्रीज को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं. और ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं एक बाइनरी ट्री की उसको रिप्रेजेंट करता है इजीली, लेफ्ट सब ट्री को, राइट सब ट्री को भी और ट्रेवर्सिंग को भी. So here is a question. Why don't we store all binary trees in arrays? Why use pointers? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अब तक जो हमने बाइनरी ट्रीज पढ़े हैं तो उनके लिए हमने पॉइंटर्स की डिफिकल्ट अप्रोच को क्यों फॉलो किया? Why we were not using the array approach? जी कौन आंसर करेगा जी? Who has the answer for this question? Why don't we store all binary trees in arrays? Why use pointers? The difficult approach. अगर हमने उसको ऐड करना था या डिलीट करना था तो हमें ट्रैवर्स अरे करना पड़ता था. इंसर्शन या डिलीशन काफी डिफिकल्ट थी. देखें आपके तमाम बाइनरी ट्रीज जो होते हैं वो कंप्लीट बाइनरी ट्रीज या परफेक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्रीज नहीं होते. ठीक है, ये सॉल्यूशन सिर्फ वायबल है उन ट्रीज के लिए जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री या परफेक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्रीज होंगे. ये सॉल्यूशन सिर्फ उन पे वायबल है, अदरवाइज तमाम बाइनरी ट्रीज को ये रिजॉल्व नहीं करता. सो कॉम्प्लेक्स अदर टाइप के बाइनरी ट्रीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें पॉइंटर्स को ही यूज करना पड़ेगा. And that's the end of today's lecture. And in the next lecture, we will be talking about the new data structure. If you have a question related to today's lecture, you can ask. जी आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. सर एक तो ये रीज़न है ना एरे को यूज़ ना करने की कि फिक्स और प्रॉपर परफेक्ट बाइनरी ट्रीज नहीं होते सारे. दूसरा ये भी तो हो सकता है कि अगर हम लोग लार्ज एरे एडवांस में क्रिएट कर लेते हैं तो वो मेमोरी भी वेस्ट हो जाती है. जी बिल्कुल, अरे के अंदर आप सिंपल बाइनरी ट्रीज या कंप्लीट बाइनरी ट्रीज को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. जो आपके पास लार्जर बाइनरी ट्रीज होते हैं जिनमें नंबर ऑफ नोड ज्यादा होंगे, वहां पे डिलीशन और इंसर्शन के टाइम पे शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट की वजह से आपके लिए अरे सूटेबल नहीं रहेगी, मेमोरी वेस्टेज होगी. ठीक है, गुड पॉइंट. एनी अदर पॉइंट और एनी अदर क्वेश्चन? Okay, no questions. So that is the end of our today's lecture.